करेगा ना वकास. Recording start. Yes. So today our topic is walk before you jump. So basically, we have 5 members of group: Awais Ahmed, Rizwan Ahmed, it's me, Sayyid Muhammad Osama, and Muhammad Waqas and Mazda. So basically, whenever you whenever you jump for a project or for a big startup, first you have need to know about a startup. What is a startup? So basically, startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model. A startup has a true north, its vision. It employs a strategy that includes a business model, product roadmap, and a view of partners, competitors, and customers. So basically, startup होता है इसके अंदर ये डिफाइन किया गया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन हम form करते हैं, उसके अंदर रिपीटेबल्स होते हैं और एक स्केलेबल बिजनेस होता है. स्केलेबल बिजनेस मॉडल से मुराद ये है कि उसके अंदर हम उसके सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि आया कि चलेगा नहीं चलेगा या फिर उसके अंदर जितने भी उसके कंपेटिटर्स होते हैं या उसके एस्पेक्ट्स हम सबको स्टडी करते हैं. उसके बाद स्टार्टअप दूसरा पॉइंट था कह रहा था कि स्टार्टअप इट्स विजन. उसका मतलब ये था कि उसके पास एक अपनी डायरेक्शन होती है कि उसने किस सेंस में जाना है. मतलब हमारे पास पूरी एक नॉलेज होनी चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए. उसके बाद हम उस पर जो है उसमें लिखा था वॉक बिफोर यू जंप. तो ये जो स्टार्टअप है और ये सारी हम प्रोसेस करते हैं सर्चिंग के लिए, ये कहलाता है वॉक करना किसी जंप से पहले. और तीसरे उसके अंदर ये बता रहा है कि इट एम्प्लॉयज अ स्ट्रेटजी दैट इंक्लूड्स अ बिजनेस मॉडल. तो पहले आपके पास कोई एक बिजनेस आइडिया, एक मॉडल होना चाहिए. उसके बाद उसका आप एक रोड मैप बनाओगे ताकि वो चीज़ एक अलाइंड हो जाए और आपके पास सारे उसके एस्पेक्ट सामने आ जाए. फिर आप अपने पार्टनर से देख के आया कि उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है नहीं है, उससे कंपेटिटर कितने हैं और फिर कस्टमर उसके हैं भी नहीं. तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है फिर हम एक स्टार्टअप क्रिएट होता है. Now I'm moving on the next slide, and for further, Rizwan will continue. Now here comes my part, that is before jump starting. Point is, entrepreneurship is number one, that is a form of management geared to its context of extreme uncertainty. Another point, validity learning, trying out an initial idea and measuring it against potential customer to validate the fact. Another point is build, measure, learn. The number one is the fundamental activity of a startup is to turn ideas into products. Number two, the measure how customer respond and then learn whether to pivot the result. Moving on the next slide, experimentation is crucial. Point is experiments start with hypothesis. Number one, the value hypothesis test whether the product service will deliver the value to its user. ये point हमें ये कहता है कि hypothesis test जो होता है वो बताता है कि हमें आया कि प्रोडक्ट सर्विस जो हमारी डिलीवर हुई है यूजर्स तक वो सेटिस्फाई करेगी यूजर्स को या नहीं. Point number two is growth hypothesis test whether new customer will be able to discover the service. ये पॉइंट ये कहता है कि ये hypothesis test whether न्यू कस्टमर जो है अप्रोच किस तरह करेंगे और अवेल करेंगे किस तरह ये सर्विस को. पॉइंट नंबर थ्री, find early adopters. Now another point is build a concierge minimum viable product. Customer feedback is useful to know whether the product fulfilled their needs or not. कस्टमर फीडबैक भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बताती है कि आया कि उनकी ये नीड्स फुलफिल कर रही है कि ये नहीं सर्विस. पॉइंट नंबर टू, द मेथड लेट्स अस नो हु आर अर्ली अडॉप्टर्स बाय कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग विद देम थ्रू ईमेल्स. बाय ईमेल्स के हमें ये पता चल सकता है कि कंप्लीटली सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं और constantly engaging के through. Now Awais Ahmed is here to proceed further. Leap of faith. In case of iPod, there was two assumptions. Users would earphones in a public place and they would pay for the music. Only the second one was a leap of faith. And point number
3, Toyota's minivan Sienna chief engineer drove through the North America, realizing that kids are most appreciative of their environment, and launched the new model built for comfort. Next, pivot is a change in strategy without the change in vision. When our experiments stop being productive, we too pivot towards a fundamental strategy to allow for better experiments. For example, if you have a GPS to help you get somewhere, that is your vision. But if you have an obstacle in front, you change your way around to reach that vision. Osama will uh, present in the next slide. Acha, mera I hi will hai, sorry. proceed further. Pivoting. I will proceed further. There are 3 types of pivots. The first one is zoom in pivot. A popular feature becomes a new product. What is on Move a company? What is on is the company that move from voters' social network to a voter contact product. Number 2 is zoom out pivot. The current product becomes a feature of the new product. Number 3 is customer segment pivot. The target customer change. Next slide, Maz Nizam will present. Moving on to next slide, we have accelerate, which consists of 2 types, which are batching and grow. In batching, we are going to divide the large batch into smaller batches for the experiment. Likewise, the Toyota used the small batch approach to complete its more capitalized American counterparts, whose batch parts were relatively bigger. Now we have grow. In grow, there are new customers which come from the actions of past customers. They inform others that and end up showing the product to others, or end up purchasing the product. Now moving on to next slide, we have it includes innovate, which big companies innovate for in innovate. The big companies can innovate, but for that to happen, they should scarce but secure resources, which includes too much budget is a harmful as too little, as countless.com failures can attest. Startup requires much less capital overall, but that capital must be absolutely secure from tampering. Then we have Independent Development Authority, and now I would like to call Wakas, who would proceed. Acceleration startup team need complete autonomy to develop and market new product within their limited mandate. Team should have full-time representation from every functional department in the company. Entrepreneur is the one who walk before the jump. It's mean पहले वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए वो स्ट्रेटजी चेंज करता है जिसके लिए एक्सेलरेशन का पार्ट आता है, जिसमें अभी हम डिफाइन कर रहे हैं कि उसको मार्केट चेंज करनी पड़ती है। जब वो स्ट्रेटजी चेंज करता है उस हिसाब से मार्केट भी चेंज होती है। तो आज का टॉपिक था हमारा with connection. But